Good morning, student. Welcome to the class of team building and leadership. Today we will learn about second unit, and that is about evaluating team performance. So here we can see there are two or three words. First, let's understand these three words. What is team? We already read in the last class. A team is a group of persons who come together to achieve a specified target. टीम वो होती है जब 3, 4, 5 कुछ लोग साथ आते हैं और किसी टारगेट को अचीव करते हैं. What is the performance? Performance is whatever goal has been given to the team, whether the team achieved this or not. This is what we call performance. For example, there is a sales team. एक sales team है, and they had been given a target of selling, for example, 200 computers. So, performance कैसे बोलेंगे हम? क्या उन्होंने 200 कंप्यूटर्स सेल किए हैं या नहीं? अगर नहीं तो कितने किए हैं? ये जो सारा काम हम कर रहे हैं to check whether a team is able to achieve its target, what are we doing? We are evaluating. So, evaluating team performance is how well the team is able to achieve its goal. कितनी अच्छी तरीके से गोल अचीव किया है टीम ने, उसे हम बोलेंगे evaluation of team performance. Let's see meaning and description of team performance. Evaluating a team performance entails determining how effectively it accomplishes its goals and objectives. इतनी अच्छी तरीके से गोल और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, उसे हम evaluation of team performance कहते हैं. This may involve taking measurements for things like productivity, effectiveness, job quality and communication. कितना अच्छा communication है, productivity यानी कि जितना टारगेट आउटपुट था अचीव करने के लिए वो आपने किया है या नहीं किया. इफेक्टिवनेस, हाउ वेल हैव यू डन इट. इफेक्टिवनेस मीन्स कितना कम कॉस्ट पे आपने कितना अच्छा काम किया. एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर वर्क. It may also entail evaluating the dynamics and cohesiveness of the team as well as the leadership of the group. We have read in the last class कि team dynamics क्या होते हैं. The structure of a team or a group. जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या नॉर्म्स हैं, किस तरह के मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कितना कोहेसिवनेस रखते हैं नहीं रखते हैं, ये सारा भी यू कैन इवेल्युएट व्हाइल इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टीम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं टीम की परफॉर्मेंस को. द फर्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक एंड क्वांटिफाइबल गोल्स. स्पेसिफिक, दैट मीन्स there should be very specific goals. बहुत vague नहीं होना चाहिए. For example, if I am a leader, I should say to my sales team that I want to achieve a target of 200 computers selling for this week. Right? तो यहाँ मैंने specific बताया है 200 कंप्यूटर सेल करना है. और इसको स्पेसिफिक कैसे बना सकते हैं, क्वांटिफाइबल कैसे बना सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी टीम में 10 मेंबर्स हैं और मैं हर एक को 20 कंप्यूटर्स सेल करने के लिए बोल दूँ, इंस्ट्रक्ट कर दूँ. ठीक है. सो आई आई इंस्ट्रक्ट माई टीम मेंबर. ईच टीम मेंबर needs to sell 20 computers for coming week. Say for example from Monday to Sunday, whatever the date is. Say for example from 1st July to 10th July or from 1st July to 7th July, each member of my team needs to sell 20 computers every week, right? So this would be a specific and quantifiable. Now, each member of my team would be knowing उन्हें कितना काम करना है, और I can easily evaluate or measure their performance because I have given them quantifiable target. 20 computers सेल करने हैं. अब कोई 20 करेगा, कोई ज़्यादा करेगा या कोई कम करेगा, तो I can easily evaluate their performance. Now next, after the quantifiable goal,
Now what you will do, you will gather the data. That means you will compile information that will be utilized to assess the team's effectiveness. So how can you say, for in the last example, I have given you the target of selling 20 computers each member each week, right? So at the end of the week or the beginning of the next week, what I will do, I will check, I will collect the data. So I will check how many members have achieved the target, whether they have worked in a team as a team or not, whether they will be helpful, whether they would be helpful to other people, or anybody is dissatisfied. So I will collect the data for each and every member. Another example is, a teacher collects data on how many homework assignments each student submitted on time and how well they performed in quizzes. So जब आप data collect करते हैं, you have a clear information and very, you can be very specific that how you are going to evaluate the performance of each person, because now you have collected the data, you have that data with you. On the basis of that data, you can evaluate each member easy. सेकेंड इज इवेल्यूएशन. अब आपने पहले गोल्स दे दिए, फिर आपने डेटा भी गैदर कर लिया कि उस स्पेसिफिक टाइम में कौन से मेंबर ने कितना टारगेट अचीव किया है. नाउ इट्स टाइम टू इवेल्यूएट, टू असेस द टीम्स परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश्ड, यूज द डेटा गैदर्ड. सो जितना भी आपने डेटा गैदर किया है उसके बेसिस पे यू विल इवेल्यूएट योर टीम्स परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आप पुराना वाला एग्जाम्पल ही वापस लेते हैं सेल्स टीम का, तो आपने डेटा गैदर कर लिया कि किसने 20 सेल किए हैं, किसने 19 किए हैं, किसने 15 किए. देन यू विल सी व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अंडर परफॉर्मर्स. क्या रीज़न है, whether they are not why they haven't able to sell 20 computers each week. So you will evaluate. अगर किसी ने ज़्यादा किया है तो what would be the underlying reason for that, right? Another example I have given here is, a restaurant manager checks if the kitchen staff prepared and served meals within the 15-minute standard time for lunch orders. It compares actual performance, how fast meals are served against the goal. जो आपने गोल सेट किया है उसके अगेंस्ट इवेल्यूएट करना. In our last example, 20 computers each member, how many of them have achieved this? किसने 18 बेचे हैं, किसी ने 22 बेचे हैं, फॉर एग्जाम्पल. सो यू विल इवेल्युएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस. नाउ आपने सेट कर दिए गोल्स, देन आपने क्वान्टिफाइबल गोल्स सेट करने के बाद डेटा गैदर किया, किसने कितना काम किया है. देन यू हैव इवेल्युएटेड दोज डेटा, देन यू विल गिव देम द फीडबैक. सो in our last example, if someone is underperformer who haven't able to sold 20 computers, so what will you do? You will counsel them, you will tell them what could be the possible, you will try to understand and you will give them feedback that what extra they can do to achieve their targets. So what is feedback? Give team members feedback on their performance both as an individual and as a group. This can be carried out in one-on-one conversation. आप अपने केबिन में बुला के मैनेजर जब ईच टीम मेंबर को अपना पर्टिकुलर फीडबैक देता है. ग्रुप फीडबैक सेशन, यू कैन अरेंज अ ग्रुप फीडबैक सेशन. कैसे? आप पूरी टीम की मीटिंग जो हर कंपनी में होती है, इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मीटिंग, यू कैन अरेंज. वहाँ आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं किसने कितना काम किया है, कम क्यों किया है, व्हाट आर द रीज़न एंड हाउ कैन दे ओवरकम दोज रीजंस. Or through a formal performance evaluation procedure. Example, a coach tells a soccer player, you did well in defending, but you need to work on passing the ball more accurately. So you are here, you are encouraging the player that you are very good in defending, but what is the lacking is passing the ball more accurately. It provides specific feedback on what the player did well and what they can improve. Action plan. After you have given the feedback, the next step is
creating a action plan based on the evaluation findings in order to address more any potential problems and enhance performance. Sorry. So in this, you will give the feedback to your employee. Say for example, in our last example, say for example, 2 people in your team haven't able to achieve the target of 20 computers, selling 20 computers. आपने उन दोनों को बुलाया, फिर आपने क्या किया, उनसे अलग अलग प्रॉब्लम्स पूछना शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल, ए जो बंदा था उसके साथ प्रॉब्लम थी कि ही डिडंट हैव कन्विंसिंग पावर, और जो बी बंदा था ही वाज नॉट एबल टू डू द टाइम मैनेजमेंट. तो दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम आपको पता चली. आपने जब डेटा गैदर किया, इवेल्युएट किया, तो नाउ आपने एक मीटिंग बुलाई दोनों की अलग अलग, और उनको बताया कि यू आर गुड, यू हैव डन वेल, आपने इतने कंप्यूटर्स बेच दिए हैं, बट वाई यू आर लैकिंग इन माई ओपिनियन, you need to work on your time management so that you can tap more clients or customer in same day, right? ऐसे ही आप दूसरे को बोलेंगे, वी मेंबर आपका जो है उसको आप बोलेंगे यू आर गुड एट इट, बट आई थिंक you should work on your convincing power, or you should take some classes on convincing power. तो next step क्या हो जाएगा दोनों के लिए? Action plan create करना कि how they can achieve at whatever they are lacking. Another example, after noticing slow responses to customer emails, a small business owner decides that the team should check email every hour and reply within 2 hours. It provides a clear solution with a simple change that the team can implement right away. The last step of the process of team performance is follow-up. आपने उनको फीडबैक दे दिया, एक्शन प्लान क्रिएट कर दिया, अब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उससे फॉलोअप ले. फॉलोअप लेना मतलब बार बार उनसे पूछना कि वेदर दे आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. Recurrently assess the team's development and make appropriate modifications. It is critical to monitor development throughout time to see whether the action plan is effective and whether more adjustments are required. For example, 1 week after the new email rule, the business owner checks how quickly emails were answered and reminds the team to keep following the 2-hour rule. It keeps the team on track and ensures that the changes are being followed. Now, what is the next step? The next step is review. Arrange a frequent review meetings to assess the performance of a team. जब आप टीम का इवेल्युएशन करते हैं तो आपको रिव्यू करना होता है हर थोड़े टाइम बाद. फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 वीक का टारगेट अपनी टीम को दिया है सेलिंग के लिए, तो एवरी ऑल्टरनेट डे और इन एवरी 2 days यू शुड क्रिएट अ रिव्यू मीटिंग. कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसको और अच्छे से कैसे अचीव कर सकते हैं. This will aid in spotting patterns, enhancing output and boosting productivity inside the company. Another example, at the end of the month, a bakery team reviews whether they met their goal of reducing cake preparation time by 10%. They discuss what worked and what didn't. It allows the team to look back at the process, celebrate improvements, and figure out any ongoing